Hey guys, welcome back to our channel. This video we'll be covering all about bullish engulfings and the power of trading them. And I'll also show you the back test. Okay, I'll take you to the daily charts and then I'll show you in the weekly and probably monthly time frames also. Show you exactly how powerful this pattern is. Now what happens, a lot of people they don't like to trade technical patterns, but then how would you get decent entries? Okay, bullish and bearish engulfings are two patterns where you get way too many entries, okay, in a year, and also the accuracy of those patterns are going to be very high. So let's begin. We'll start with analyzing what are bullish engulfings first. Okay, then we'll try to go on the charts and spot them, and I'll show you like how exactly me and Nikita, how we make money trading them. Basically you'll get a mini system out of it. Let's begin with the charts and I'll take you to trading view now. Just before we start the bullish engulfing video, I just want to remind you we have a workshop coming up in Mumbai on 11th and 12th May, where we cover what setups we trade, because without the setups it's very hard to make money. And secondly, we share our own trades also. Like for example, whatever we do, we share it with the group that they know during live markets, like how we trade and how we navigate, be it spikes or be it the direction. So if you are interested in that, you register for the workshop via the link given in the description below. Okay, so first of all, we need to understand what are bullish engulfings. Okay, once we understand that, we can move on. Okay, so basically the bullish engulfing is basically a two candle reversal pattern. अपने को दो candles चाहिए, okay, for this pattern to emerge, and like how it's written is second candle completely engulfs the body of the first candle. I'll show you in a pictorial way. So what are bullish engulfings? Bullish engulfing is basically a two candle reversal pattern. इसमें हमको like दो candles चाहिए. First one like preferably हमको red चाहिए. But in many cases, even if it's not a red one, it still works out. So if you observe this candle, the red one, इसका जो body है, this section, this body is entirely engulfed by the next candle. Now इसका price action के हिसाब से इसका logic क्या है? Now just observe this red candle. Okay, इस red candle में red है means there are sellers in this candle more than buyers. That's why the candle is red. Okay. एंड आफ्टर ये मान लो एक पूरे दिन का कैंडल है, सो इसमें काफी बायर्स हो गए, काफी सेलर्स हो गए, बट द नेक्स्ट डे जो होता है ना, मैं ये जितने भी सेलर्स है उसको ओवर पावर कर दिया है बायर ने. ओके, विच बेसिकली टेल्स अस दिस बायर जो नया वाला है ने कल के पूरे प्राइस एक्शन को एनगल्फ कर दिया है, and he's probably a stronger force than the bearish trader who was trading yesterday. Okay, cool. So we finished the part of what are bullish engulfings. आई होप ये क्लियर है आपको कि एक कैंडल को एनगल्फ करना चाहिए, द सेकंड कैंडल इट शुड बी बिगर इन साइज बॉडी, एंड वी डिसरिगार्ड द टेल्स. ओके, ये जो ऊपर के जो टेल्स होते हैं ना, वी डिसरिगार्ड देम कंप्लीटली. नाउ नेक्स्ट लेट्स लुक एट व्हाई टू ट्रेड बुलिश एनगल्फिंग्स. फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर गुड टेक्निकली. ओके, अगर आपके टेक्निकल्स ठीक है तो मान लो आप दो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो, एक तो फ्यूचर का ट्रेडिंग कर रहे हो, दूसरा ऑप्शन का ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग प्रेफरेबली. सो विच एवर सिस्टम, मान लो अगर कोई सिस्टम है वो अगर फ्यूचर्स में ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, या मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट भी रह रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल ये बुलिश एनगल्फिंग को ही पकड़ लो, हो सकता है इसका फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके ज्यादा प्रॉफिट ना आता हो, बट ऑप्शन सेलिंग अगर हम करेंगे, अगर हम कोई ओटीएम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी हम बहुत हाई ला सकते हैं इसमें. एंड आई एम द काइंड ऑफ अ गाय, ओके, लाइक आई डोंट वांट टू लूज मनी लाइक एवरी डे. आई वुड प्रेफर कि कभी तो भी मैं हारूं, पर लाइक हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा हो, बट आई वुड प्रेफर लाइक अ विनिंग एटीट्यूड एंड अ विनिंग माइंडसेट डेली. So this kind of like bullish engulfing pattern gives me that. Now basically once I've identified the pattern, okay, first of all it gives me an entry point. तो अगर आपको साल में रिटर्न अच्छा लाने का है तो यू नीड मल्टीपल सिस्टम्स में मल्टीपल एंट्रीज. जितने ज्यादा एंट्री करोगे, मान लो अगर आपको एक ही एंट्री मिल रहा है साल में कोई सेटअप का, तो यू आर नॉट गोइंग टू रिस्क लाइक ऑल ऑफ योर कैपिटल राइट ऑन दैट ट्रेड, राइट. सो आप यूजुअली यू विल ट्राई टू रिस्क वेरी लो, एंड इफ यू वांट टू रिस्क लेस, अगर आपको ड्रॉडाउन वगैरह कंट्रोल करना है, then you basically need a lot of trades in a year, accurate trades in a year to bump up your account. So this can easily become one system which you use in a year, okay, for option selling. Now once we've identified this pattern, मान लो ये bullish engulfing spot कर लिया हमने, okay, और इसमें क्या करेंगे हम, we'll try to identify levels where we can like sell put options at, right, कि हमको पुट ही बेचना है हर बार. जब भी हम ये बायर को आइडेंटिफाई करते हैं, इफ बायर इज स्ट्रांग वी आर गोइंग टू सेल पुट्स ओनली. कूल. नाउ व्हाट वील डू, वील ट्राई टू लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ बुलिश एनगल्फिंग. लेट्स स्टार्ट विद द डेली टाइम फ्रेम. ओके, देन इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में बताता हूँ आपको मैं. सो नाउ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पार्ट जो है अभी चालू होता है वीडियो का. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मार्क्ड ऑल द बुलिश एनगल्फिंग्स. जहां जहां मुझे बुलिश एनगल्फिंग दिख रहा है मैंने मार्क कर दिया है, एंड उसको केस बाय केस दिखते हैं. ठीक है, फुल केस स्टडी करते हैं बुलिश एनगल्फिंग का. कूल. सो अभी तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग करंटली चालू है. ओके, आई विल जस्ट मार्क इट बाय एन एरो.
तो इसको we'll see how it plays out in the coming days, okay? उसके पहले what we'll try to do, इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। Cool? तो अभी देखो ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न थे, ये एक दोजी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक था जिसका बॉडी बहुत छोटा था, ठीक है, यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट कैंडल, द ग्रीन कैंडल हैज एनगल्फ्ड दैट कैंडल। अब देखो ये रेड कलर में नहीं है, ओके, ये ग्रीन कलर का है, ओके, इसका पहले वाला दिन। फिर भी ये ट्रेड मस्त चलता है। लोग क्या करते हैं, दे ओनली वेट फॉर द रेड कैंडल्स, दे मिस अमेजिंग ट्रेड्स इन दैट, ओके। तो जस्ट रिमेंबर, पिछले कैंडल की जो बॉडी है, इफ यू एनगल्फ इट, ओके, देन बेसिकली इफ यू, अगर आप ये वाले कैंडल में एंट्री करो, ठीक है, नाउ इफ यू टेक एन एंट्री इन दिस कैंडल वेर यू गॉट द बुलिश एनगल्फिंग, नाउ टू थिंग्स यू कैन डू। फर्स्ट थिंग, ओके, आई विल टेल यू, सी आपको ये क्लोजिंग के आसपास समझ गया कि बुलिश एनगल्फिंग है, तो you can open the charts at 3 or 3:15 and then you can figure out what kind of a day it is, right? You'll understand bullish है या bearish है। तो I understood bullish day है, okay, for example. Now let's first thing what you can do for the next day, सबसे पहले तो ये gap up ही हो रहा है, okay? तो मान लो अगर आप यहाँ पे put, if you go and sell puts, okay, for STBT itself is going to give you profits, right? That's the first big advantage. Now the second big advantage what you can do, if you do level based trading, okay, in this, what you can do, current day low जो है उसके नीचे 115 मिनट कैंडल क्लोज का एसएल यू कैन कीप, और 5 मिनट कैंडल क्लोज, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लाइक, सबका माइंडसेट क्या है, यू कैन डू लाइक दैट। बिकॉज यू नो निकिता ऑल्सो इन 1 or 2 लाइक डेज अगो शी सेड कि एसएल सबका अलग होता है, बिकॉज सबका रिस्क टॉलरेंस इज वेरी डिफरेंट, ओके। सो आई एम द काइंड ऑफ अ गाय, आई वांट टू विन, सो मोस्ट प्रोबब्ली व्हाट आई विल बी डूइंग, once I have spotted the bullish engulfing, I'll probably go and sell this OTM put, okay, here. So I want to win, I know that level is not going to come, and the next day morning opening pay I'll be in profit. Okay, so two things I'm marking here. First thing I've written down the STBT profit. So overnight if you go and sell puts, you're going to be in profit the next morning at 9:15. Okay, now the secondly, मान लो even if you book it, मान लो आपने STBT book कर दिया और इंट्राडे में मान लो निकिता टेल्स यू मेनी टाइम्स, राइट, दिस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट, so let's assume you're getting a dip in the day, but you know this low of the bullish engulfing, this is going to be protected, ओके। तो आपको पता है जब ये डिप मिल रहा है ना आपको, मान लो यहाँ पे कहीं तो ये डिप मिल रहा है, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग दिस रेड कैंडल डे, द नेक्स्ट डे, तो वो डिप में कांट यू सेल दिस पुट्स अगेन, दिस ओटीएम पुट्स, आई थिंक यू कैन वेरी इजीली। तो ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके भी यू कैन गेट द प्रॉफिट्स, ओके। नाउ दिस वाज एग्जांपल 1, अभी मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। Now let's look at the second example. Now this is the second example, okay? Market via an arrow. Okay, now these two charts we want to focus on. So look at this candle. This candle का जो body है, we've engulfed that in the next candle, right? So around this level, around 46,863, we got to know कि ये bullish engulfing का trade है, okay? And ये जो low है, जो करंट डे का जो लो है वो जो था 46,566, ये लो जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। नाउ इफ यू लुक एट दिस बुलिश एनगल्फिंग, आपको दिखेगा कि लो को टच कर रहा है, राइट, वो, बट ये एग्जांपल में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। 60 रुपए का ऑप्शन भी आपका 20 वगैरह पे गया है इसमें, राइट। इसमें क्यों गया है ना, ये जो डे था, ये फ्राइडे था, इफ यू कैन लुक डाउन ना स्क्रीन के नीचे देखना आप, 22 मार्च था फ्राइडे, और ये 26 मार्च ट्यूजडे को, मतलब इट वेंट एंड टच देयर, सो 1 डे हॉलीडे ऑल्सो यू गॉट, राइट। सो थीटा डी के इसमें काफी हुआ है। एंड एसएल का रोल भी बताता हूं मैं आपको। आई विल टेक यू टू द 15 मिनट चार्ट्स, ओके, ऑन 26 मार्च। देखो ये हमारा दिन है, देखो ये दिन है हमारा, यहाँ पे हमको समझा है बुलिश एनगल्फिंग हुआ है, एंड देन बेसिकली इट ट्रेडेड साइडवेज द एंटायर डे, एंड ये बहुत ही गंदे, मतलब बॉडी, एक्चुअली वी नीड अ बिग कैंडल, ऐसे बॉडी बड़ी चाहिए हमको। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है ना कोई लेवल का, तो इसको मैं मानता नहीं है अच्छा वाला कैंडल है ये, राइट। But even if you want to get out there, you will still end out in profit, okay, in that strike. You can go and backtest this. I just did it. And if you are like me, if अगर आपको चाहिए ज्यादा, मतलब सक्सेस रेशियो ज्यादा चाहिए आपको, तो आप होल्ड कर सकते हो, और आपका इवेंचुअली लाइक मार्केट हैज गॉन अप, so you will get the profit on the put side for you. चलो अभी quickly देखेंगे हम, क्योंकि we want to cover a lot of examples. So look at this one. So here you found the bullish engulfing, okay. So the next day market has gone up, so this level the low has been protected, okay. So if you sold puts, ये Tuesday था, आपको next day expiry के लिए अगर आप puts बेच के जा रहे हो, तो आपको काफी अच्छा profit हो सकता है इसमें, right? So that's it. Look at this example now. This was a Tuesday again. So Tuesday को you got a bullish engulfing. Next day was an expiry day, okay. आप अगर put बेच के जा रहे हो तो आपका profit होना है, तो वो एक्सपायरी जो करंट एक्सपायरी है उसमें आपका तब तक के लिए वो लेवल नहीं आएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा पुट में, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। इसका भी बॉडी इज बिगर देन द प्रीवियस कैंडल्स बॉडी,
राइट। सो दिस इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ बॉटम, तो इसके बाद तो नीचे आया ही नहीं है, तो अगेन यहाँ भी प्रॉफिट होएगा आपको, तो ये वाले कैंडल में भी प्रॉफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि मार्केट हैज नॉट कम डाउन, तो एनी पुट यू सोल्ड यू आर गोना बी इन प्रॉफिट। नाउ मुझे ही बताओ आप, इजंट इट बेटर टू स्टडी दिस काइंड ऑफ कैंडल्स ऑन पैटर्न्स एंड मेक मनी वाया दिस इन अ वेरी पीसफुल मैनर, रादर देन वो दिन में 50 बार एडजस्ट करना है, फिर मतलब इतना मूवमेंट करने के बाद प्रॉफिट लाना है, आई हेट दैट वे। सो फॉर मी दिस मेथड इज वेरी पीसफुल एंड इसमें ज्यादा मतलब ट्रेड करना नहीं है मुझे, एक बार एंट्री कर लेनी है और फिर रुकना या तो स्टॉप लॉस के लिए या तो वो प्रीमियम जीरो जाने के लिए, राइट। व्हाट यू कैन डू, वन वेरी सिंपल थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर बुलिश एनगल्फिंग, व्हेनेवर यू सेल एन ऑप्शन, ओके, अभी दो रिस्क है यहाँ पे, एक ओवरनाइट का एक इंट्राडे का है, तो इंट्राडे का जो है आप आपके ऑप्शन का डबल का स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो इफ डबल का ऑप्शन, इफ द ऑप्शन डबल्स फ्रॉम योर सेलिंग प्राइस एंड यू विल एग्जिट, ओके। नाउ इसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, सो आई जस्ट शोड यू मल्टीपल एग्जांपल्स, ऑल एग्जांपल्स वी वन, नॉट इवन अ सिंगल वन वी लॉस्ट, ओके। इनफैक्ट यू नो बुलिश एनगल्फिंग का जो है, I'll tell you why I like this method so much. Current week में भी जाता हूँ मैं. Now let's just look at this example, okay? अभी यहाँ भी बुलिश एनगल्फिंग क्लियरली मिला, राइट। अभी कुछ नहीं करना है, ऐसा दिन में एक बार छोटा क्वांटिटी मार के फिर 4 बार एडजस्ट करो उसमें, और फिर लोग बोलेंगे मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। I don't want to do all that. We trade in a very different manner because we look at price. प्राइस में अभी got to know बुलिश एनगल्फिंग है यहाँ पे, okay? So what we did, मेरा एक छोटा अकाउंट है 10 लाख का, okay? इतना क्वांटिटी जा रहा है, I sold, okay? First what I had done in this, मैंने स्ट्रैंगल मारा था, तो वेडनेसडे को इनसाइड कैंडल था, राइट। सो आई सोल्ड स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैंगल के बाद मेरा व्यू था कि जहां भी मार्केट जाएगा आई विल मैनेज माय स्ट्रैंगल, राइट। तो नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, क्लोजिंग के टाइम पे मुझे बुलिश एनगल्फिंग है समझ गया, तो व्हाट आई वेंट एंड डिड, आई सोल्ड दिस 47,500 का पुट ऑप्शन एंड द फार ओटीएम कॉल जो मेरा पिछले दिन का था, आई हेल्ड इट, ओके। Now if these both go to zero, I'll end up making 90 points. 90 points will generate 1.5% for you in a week. Let's see ये चलता है कि नहीं. I don't expect this level 47,700 to go to be taken out this week, but let's see, result का season है and this is already in profit, तो देखेंगे कहाँ पे खुलता है। Preferably I'm hoping for a bullish opening, नहीं हुआ तो I'll just manage। मैं क्या करूंगा, ये ऑप्शन काट के I'll just go little behind, अगर नीचे की तरफ आने लग गया ना मार्केट। Cool, so I've shown you कि like how much we trust, we ourselves trade on that. So now I've showed you all the examples on daily chart, okay? Lately जितने भी हो गए सारे बता दिए मैंने। Now I'll show you weekly time frame के ऊपर also, मतलब weekly time frame पे let's see monthly में। Now what I've done, मैं मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे I've got you guys, and let's just see वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ ट्रेड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिख रहे नहीं है बुलिश एनगल्फिंग्स, ओके, तो मैं पीछे आ गया हूँ एंड विच एवर बुलिश एनगल्फिंग वी सी, लेट्स जस्ट सी हाउ इट परफॉर्म्ड, ओके। तो इन दिस वीक मान लो 27 फेब का जो वीक था, वी फाउंड की बुलिश एनगल्फिंग है, तो नेक्स्ट वीक के लिए वी डोंट एक्सपेक्ट दैट लेवल टू गो, ओके। नेक्स्ट वीक के लिए लुक दैट लेवल हैज गॉन टू जीरो। नाउ वी विल लुक एट ऑल एग्जांपल, जितने एग्जांपल है सब देख लेते हैं। अभी ये 26 सितंबर का जो है उसका बॉडी इज वेरी स्मॉल, नाउ दैट बॉडी इज एनगल्फ्ड द नेक्स्ट वीक, ओके। अभी हमको समझ गया यहाँ पे कि बुलिश एनगल्फिंग आ गया है, तो ये जो 37,963 लेवल है, वो लेवल के नीचे के पुट्स का जीरो जाने का प्रोबेबिलिटी बिकम्स वेरी हाई, ओके। सो दैट हैज गॉन टू जीरो अगेन द नेक्स्ट वीक। सेम थिंग हियर, वी फाउंड आउट यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग है, नेक्स्ट वीक दिस लो शुड गो टू जीरो, इट हैज अगेन गॉन। सेम थिंग हियर, इसका जो बॉडी था, दिस इज एनगल्फ्ड बाय द बॉडी ऑफ द 4th जुलाई वाली कैंडल, राइट, दैट हैज आल्सो गॉन टू जीरो। एंड लुक एट दिस 27 दिसंबर आल्सो, ये एक तो सेल ऑफ था, सेल ऑफ के बाद बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग बना है एंड दीज वर्क वेरी वेल। अगर लाइक सेलिंग, अगर एक सेल ऑफ आया है ना प्रायर में, देन द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वर्क्स रियली वेल। सो अगेन दीज पुट्स हैव गॉन टू जीरो, राइट। So the accuracy of this pattern is really good. Daily maybe it works fantastically. Weekly may also it works fantastically. And the accuracy of this system, you can increase it if you sell options. अगर आप futures trade करोगे तो इसका accuracy गिरेगा, right? So option selling में सेटअप्स निकालना काफी इजी होता है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई लेवल्स वेयर मार्केट डजंट गो टू, सो इट्स रिलेटिवली इजियर टू फाइंड सिस्टम फॉर ऑप्शन सेलिंग रादर देन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, राइट। सो डेली वीव कवर्ड एंड वीकली आल्सो वीव कवर्ड। नाउ लास्ट में क्या व्हाट विल डू, मंथली टाइम फ्रेम के देखते हैं हम। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आई कैन स्पॉट 2 or 3 बुलिश एनगल्फिंग्स। फर्स्ट वन ये कि द नेक्स्ट मंथ द लेवल हैज गॉन टू जीरो, तो व्हाट यू कैन डू, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मंथली के पुट्स यू कैन स्टार्ट सेलिंग, लाइक वी डोंट प्रेफर सेलिंग मंथली ऑप्शंस, वीकली ओनली इज द बेस्ट इन माय ओपिनियन। दिस द सेकंड वन, और ये थर्ड वाला है, मतलब आई हैव शोन यू मेनी एग्जांपल्स। अगर आपको ढूंढना है तो आप खुद ढूंढ के लेक बोल सकते हो मुझे वीडियो के नीचे, यू कैन कमेंट, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ कैंडलस्टिक पैटर्न व्हिच कैन बिकम अ सिस्टम फॉर यू।
एंड इस पे काफी ज्यादा ट्रेड्स यू कैन टेक ट्रेड्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम, यू कैन टेक ट्रेड्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एंड द मंथली टाइम फ्रेम, राइट? सो दिस बेसिकली नेकेड ऑप्शन सेलर्स कैन यूज दिस वेरी वेल. इफ यू ट्रेड इन स्प्रेड्स, वो भी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं इसमें. व्हाट दे कैन डू, ये जो लो है वो स्ट्राइक का ऑप्शन दे कैन गो एंड सेल डेली टाइम फ्रेम पे. मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मान लो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड उसके नीचे वाले 2 स्ट्राइक है 3 स्ट्राइक दूर का पुट यू कैन बाय. तो व्हाट हैपेंड, आपने एक स्प्रेड में ट्रेड कर लिया, मैक्स लॉस जहां पे पता है आपको, एंड प्रोबेबिलिटी इज फुल्ली इन योर फेवर, राइट? आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट व्हाट आर बुलिश एंगल्फिंग्स. आई हैव टोल्ड यू व्हाई वी शुड ट्रेड देम, टोल्ड यू मेनी ट्रेड्स यू विल गेट. ओके, एंट्री ज्यादा चाहिए आपको बेसिकली, एंड उसका बैक टेस्टिंग आई हैव शोन यू ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली में भी 3 एग्जांपल बता दिए मैंने. तो इससे ज्यादा आई थिंक व्हाट कैन क्या करना पड़ेगा कोई पैटर्न को, यू नो, फॉर यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग इट. एंड द लॉजिक आल्सो इज प्रीटी गुड फॉर द पैटर्न. इट्स बैक्ड बाय लाइक प्राइस एक्शन का लॉजिक, वेयर बुलिश पीपल आर ओवरपावरिंग द बेरिश ट्रेडर्स. सो आई होप यू स्टार्ट ट्रेडिंग बुलिश एंगल्फिंग्स. स्टॉप लॉस डबल का रखना, एंड ओवरनाइट में अगर आपको डर लग रहा है तो यू कैन स्टार्ट हेजिंग योर ऑप्शंस. यू कैन बाय 500 और 300 पॉइंट OTM पुट्स जो है आपके सोल्ड प्राइस से, राइट? 1000 पॉइंट दूर के पुट को बाय करना, इट्स नॉट कॉल्ड हेजिंग, इट्स फॉर मार्जिन बेनिफिट. So I hope this was useful for you. If this video was useful for you, please consider hitting the like button, and we'll come out with many more educational videos where we'll show you the accuracy of many things, and we know how to increase the accuracy of systems also, so we'll cover that as well. So my next video, if I get a good response on this one, will be on bearish engulfings, and I'll tell you how to trade them also. Cool. So thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and if you do trade bullish engulfings in the future, do tag me and comment below our videos. Okay, I'll see you soon. Thank you. Bye bye.